Good morning to all of you, wherever you are streaming in from. Hello, everybody. Welcome to the live stream today on Zbit, and we are live now on both the platforms. On the Zbit live streaming app as well as on YouTube. So I'm going to be talking today about a really interesting topic. It is slightly different from the topics that we have been discussing lately, and you can clearly see that I don't need to hide the topic from you. It's very well mentioned on the top of the zbit.com official apps live streaming broadcast, where you can see the topic what are NFTs, and we'll be talking about NFTs in an in-depth manner today, right? I was here yesterday as well, and I talked about a topic that has been
quite popular in the last few days. It is having to do with what exactly Bitcoin is and whether Bitcoin will become gold, ever become the new gold or not. We discussed that yesterday. I explained you what all factors are there that differentiate gold and Bitcoin, and these factors summarized for us and concluded for us that probably no. Bitcoin can never become gold, but it is very fast becoming something parallel to what gold stands for us, stands for investors and traders in the market, right? We saw that gold is a chemical element, and um, Bitcoin is a digitized code which is expanding very fast. Its use case is expanding very fast. Its acceptability over the world is expanding very fast, and it is universally being accepted. And we also saw how gold has been there since the last 5,000 years, but Bitcoin is relatively new. It's just been 16, 17 years since Bitcoin came into this world. And gold has had a very long journey. It has, survived all these wars. It has survived all these dips. It has seen the recession period as well, and it has seen really tough times. But it has managed to survive all through it, and all these 5,000 years, it has built its own legacy, its stature, its respect in the market to become what it is today. And Bitcoin has a long journey when it comes to becoming gold. But we understood that in the future, maybe the forex reserves might have uh, Bitcoin as part of their percent. There might be some share of Bitcoin as well. We saw that, and we also saw it could be very much similar to having 60% gold, 20% Bitcoin, and all these countries might have 20% currency. So Bitcoin is gradually progressing. It's progressing really fast, and it will eventually become you know from a risky asset probably to a safe haven kind of an asset. But that there is plenty of time, and until that happens, we just have to wait and watch and see how Bitcoin does, how it grows. It's grown in leaps and bounds. It has almost reached 100,000 now. It has also gone past 100,000 in the recent past, but um, it has come back to 95,000. It stands right here. You can see it on your screens. And we'll have to see what this year has in store for Bitcoin 2026, right? And we'll have to see how uh, you know it competes with gold, or maybe there is no competition at all with gold, because gold is probably always going to be there. However, Bitcoin is fast progressing, and it might uh, become the digital gold, or maybe it has already become digital gold in today's world, right? Apart from this, we also discussed about mining yesterday. How are what do miners do? What do they get as rewards? I told you that they get you know Bitcoins as reward to solving these mathematical equations, these complex questions. And they keep the blockchain technology, the network, very much secure because of the work that they put in day in and day out, right? That is what miners do. And I also told you that it is not easy to do mining. Like we also went through a news that said that a few two miners basically had hit the jackpot, and they'd won $300,000 in the last few days. And I tried to explain you whether
it is possible for anyone else to do that as well, right? But that was a rare jackpot that they found, and miners actually don't actually get this kind of big jackpots. And it is not difficult, it is not easy as well doing mining, because it involves the usage of very heavy computers, ASIC computers, and these computers also heat up the environment where they are placed, and they require cooler environments to operate in. It's very heavy machinery, and they also use up a lot of electricity as well. So we discussed that, and then we also progress towards discussing uh, you know we also discussed seed phrase, right? If you can just give me a minute, I will. Right. We also discussed yesterday about seed phrases. What is exactly a seed phrase? I told you that it is a 12 to 24 word, the master key kind of a thing that is there, and you get it when you create your wallet, right? When you get your wallet. Uh, it is important for you to understand that it is one of the most important security features. Protecting your seed phrase is really important. I discussed that yesterday, and I told you that if you have that, you can restore your balance with it. You can open your crypto account on any platform, on any device, and you can also not afford to lose it, because if that happens, scammers will be able to take all of your money, transfer all your coins, and it is almost impossible to retrieve that data back, right? So it is important to protect your seed phrase. We discussed that as well. We also discussed about the future of cryptocurrency yesterday, right? We discussed how and in which direction exactly crypto companies are progressing towards, how the government's regulations are coming in, and how they might just make the environment on crypto markets, in the industry, in the crypto forums, kind of safer and much more transparent. We discussed that yesterday, and we also looked at how these different uh, you know platforms are. If you can just give me a minute. Right.
We also discussed that how are these countries looking forward to bringing their own cryptocurrencies in the near future as well, and launching their own crypto coins. uh, Obviously the infrastructure in terms of that will have to improve, but they might be coming up with that. We discussed this yesterday, and if you've just joined, I am giving a short recap of what all I discussed yesterday, and then I will be coming to a newer topic on the Zbit live stream app. I am live, and I'm also live on the YouTube streaming platform as well. Right. We also discussed how AI and crypto, if they combine somehow in the coming future, future generations will really have a ball on crypto platforms and in the market, because it will make risk management much more easier. It will make stuff more convenient, and it will make trading a lot more easier as well, right? uh, Another thing that we discussed was that whether fiat money will be replaced completely by crypto. I don't think so. That will happen. I told you that it might become a hybrid kind of an atmosphere wherein banks are also operating alongside crypto, and both things are operating in a very smooth and efficient manner, right? Apart from that, I also discussed how, with the coming of the governments being involved much more now, and with all these regulations being coming in, we discussed how there is this bill coming in the US, which is about to become a law. A few amendments are pending regarding that, and we discussed how um, these taxation rules and these KYC rules are trying to bring in much more clarity, much more transparency, and much more security when it comes to the crypto world. There will obviously be lesser scams once this happens. And right, I also told you that I somehow think that there will be all these items when you talk about that sell for very big amounts of money, whether it is property, whether it is gold, artwork, or stocks or bonds, will somehow probably be tokenized at one stage or the other, wherein इनके buying और selling भी होगी, और ग्लोबली होगी, और विद इन सेकेंड्स होगी। ये भी मैंने कल आपको बताया था। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो ऑब्वियसली स्टोर ऑफ वैल्यू तो खैर बन ही चुका है, लेकिन इवेंचुअली it will become something parallel to gold, and obviously become probably become digital gold 2.0, right? And a mass adoption of uh, Bitcoin and cryptocurrency is coming. I'm sure that it'll be as fast as UPI has done probably in India. But this will obviously mean that it is a step by step process, and it is not an overnight kind of thing. It will happen. When it happens, uh, you know all these web3 apps and all these digital transactions, payments will be done through crypto, and it will probably bring a massive change in the world. So we discussed all of these things yesterday before I left off on this live. Uh, and today's topic is no different. It is about NFTs, what exactly NFTs are, and what uh, all we'll be looking at today is that whether they have the same hype that they had when they were launched, and why do they sell for millions. Obviously that is the big question a lot of people don't know the answer of. And we will also discuss that what role do NFTs have to play in today's times, as well as in the coming future as well, right? uh, you might have heard about this term NFTs, but we will be discussing it in a lot of you know
in-depth manner today, so that you have a better idea and you go back from this live session with some kind of learning and knowledge when it comes to NFTs, right? I'm still waiting for a few more people to join in. Once they join in, I will begin with the topic of the day. That is, what are NFTs, and I'll be doing an in-depth analysis of NFTs and conversations and debates around it, right? If you just joined on Zbit, I have also with me an offer for you all. It's a giveaway offer. I am giving you 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free of cost. All you have to do is deposit just $3 into your own Zbit account, and as a new depositor, you will be getting from my side 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu absolutely free. This is because we want you to kickstart your crypto journey on Zbit in the most, happiest and the most positive manner. And so this is the reward that we have for you. And if you've not deposited yet, अगर आप पहले टाइम डिपॉजिटर हैं, तो आप मेरी तरफ से 20,000 पेपे या 20,000 शिबा इनू एक चीज़ आपको फ्री मिलेगी। मैं आपको बस कुछ नहीं करना है, आपने खाली $3 मिनिमम अमाउंट, हमने $3 रखा है इसमें। काफ़ी कम प्राइस है मुझे पता है, पर $3 या $3 से ज़्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो आपको मेरी तरफ से 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। On that note, I will be waiting for a few more people to join in on Zbit or the YouTube live stream where we are also live, and then I'll begin with the topic of the day. Right? Stay tuned.
Right. A few more people have joined in, and now I can probably begin with the topic of the day, that is NFTs, right? What exactly are NFTs? तो अब हम शुरू करते हैं. NFTs basically stands for non-fungible token. Non-fungible token, right? NFT, that is the फुल फॉर्म. अब नॉन फंजिबल टोकन कह तो दिया, लेकिन इसका इससे मतलब क्या है? इट इज लाइक अ डिजिटल, एक डिजिटल चीज का ओनरशिप सर्टिफिकेट बेसिकली, ठीक है? उसको कहते हैं एनएफटी. नाउ दैट डिजिटल चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट डिजिटल प्रोडक्ट could be, it could be art, it could be music, it could be a video clip, it could be a gaming item, it could be, you know anything, membership pass or a digital collectible, anything, right? It could be anything digital. And what it is basically is that it is a digital certificate or a digital ownership certificate that is there, that proves कि ये आइटम असली है और इसका ओनर मैं हूं और ये मेरे नाम पे है, ठीक है? उसको कहते हैं एनएफटी बेसिकली. एक इट इज लाइक ओनरशिप सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है? Any product that could be there on the internet, it is like the ownership certificate of that product. It means that this product is for real, and I am the owner of this product, particular digital product, right? आपके नाम पे है ये, ठीक है? इसको कहते हैं एनएफटी बेसिकली, ठीक है? अब आते हैं एनएफटी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे. अब नॉन फंजिबल आप पूछेंगे, एनएफटी में नॉन फंजिबल टोकन में फंजिबल का मतलब क्या है? तो फंजिबल जो है, इट स्टैंड्स फॉर रिप्लेसेबल, नॉन रिप्लेसेबल टोकन, एक तरह से आप ये समझ लीजिए, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको दूं तो मान लीजिए कि एक 100 का नोट है. अब वो किसी भी 100 के नोट से रिप्लेस हो सकता है, ठीक है? राइट. लेकिन अगर आप बात करें कि कोई बड़ा प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं, किसी बढ़िया पेंटिंग की बात, मोनालिसा की बात करते हैं हम, जैसे कि मोनालिसा तो एक ही है ना दुनिया में. इट इज वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पीसेस ऑफ आर्ट, एंड इट इज यूनिक, इट इज रेयर, राइट? अब जो एनएफटी ले लेगा मोनालिसा का, तो इसका मतलब ये है कि ये इसका जो डिजिटल प्रोडक्ट है एनएफटी का, मोनालिसा का, वो किसी और के पास नहीं है. आई एम द, अगर मैंने ले लिया मोनालिसा का एनएफटी, तो मतलब मेरे पास ही द ओरिजिनल मोनालिसा पेंटिंग है डिजिटली, एंड उसकी कॉपी नहीं है मेरे पास, ठीक है? अब बात करते हैं कि एनएफटी किस पे बनती है. ऑब्वियसली ब्लॉकचेन पे ही बनती है, इसलिए आज हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं. ये ब्लॉकचेन किस पर स्टोर होता है? इट कैन बी स्टोर्ड ईदर ऑन इथीरियम, ऑन पॉलीगॉन और ऑन सोलाना, और ऑन द बीएनबी चेन, ठीक है? ब्लॉकचेन पे क्यों है ये? क्योंकि ब्लॉकचेन इंश्योर करता है 3-4 चीजें. क्या चीजें इंश्योर करता है? सिक्योरिटी, ओनरशिप, ऑथेंटिसिटी, ट्रांसफर हिस्ट्री, नो डुप्लीकेशन. ये सारी चीजें ब्लॉकचेन इंश्योर करता है, इसीलिए ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे स्टोर होती हैं, ठीक है? अब आते हैं इसकी यूजेज पे. अब काफी लोग ये सोचते हैं कि एनएफटीज जो हैं वो जेपेग है बस, है ना, जेपीजी इमेजेस हैं. ऐसा नहीं है, ठीक है? रियल यूज केसेस जो हैं वो अब अगर आप देखें तो काफी पॉपुलर भी हो रहे हैं अब मार्केट में, राइट? अब डिजिटल ओनरशिप हो गया, जैसे किसी आर्ट या म्यूजिक का, या किसी डिजाइन का, या किसी भी कलेक्टेबल का,
एक डिजिटल ओनरशिप का भी एनएफटी लोग ले लेते हैं, है ना। गेमिंग आइटम्स हो गए, किसी गेम में आपने देखा होगा कोई स्किन्स होते हैं, कुछ वेपन्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इनका भी एनएफटी पे यूजेज काफी बढ़ गया है, राइट। इसके अलावा काफी सारे टिकट्स होते हैं, कॉन्सर्ट टिकट्स हो गए या स्पोर्ट्स मैच के एनएफटी टिकट्स हो गए, इनका भी एनएफटी कराया जाता है। ब्रांड मेंबरशिप्स हो गए, आइडेंटिटीज हो गई, जैसे सर्टिफिकेट्स हो गए, डिग्रीज हो गई, इनका भी लोग एनएफटी करवाते हैं। अब सवाल आता है कि क्या एनएफटी का कॉपी हो सकता है या नहीं। कॉपी तो जरूर हो सकता है, लेकिन ओनरशिप नहीं हो सकती कॉपी। एक ही बंदा ओनर है और वही सोल ओनर रहेगा, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने, अगर मैं आपको जैसे मोनालिसा का एग्जाम्पल दे रहा था, अब किसी ने मोनालिसा की अगर फोटो ले ली, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पेंटिंग जो है वो उनकी नहीं होती। एनएफटी की इमेज अगर आप सेव कर लें तो टोकन भी उनका नहीं होता, वो जिसका है वो उसी का रहता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि एनएफटी का कॉपी जरूर हो सकता है, लेकिन ओरिजिनल एनएफटी जिसके पास है वो उसी के पास रहेगी। ही इज द सोल, ही और शी इज द सोल ओनर ऑफ इट, ठीक है। अब आते हैं कि एनएफटी का हाइप क्या है और इसका रियल फ्यूचर एग्जैक्टली है भी कि नहीं। तो पहले क्या होता था, एनएफटीज जो होते थे लोग करवाते थे कार्टून के, जेपेक्स के, फ्लिप्स के, पंप डंप, ये सारी चीजों के। अब अगर आप देखें फ्यूचर जो दिख रहा है अभी, उसमें लोग टिकट्स के, मेंबरशिप्स के अपने, और डिजिटल आइडेंटिटीज के, गेमिंग इकोनॉमी के, इन सब चीजों के एनएफटीज भी करवा रहे हैं। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि एनएफटीज काफी अब ज्यादा इवॉल्व हो रहे हैं एंड दे आर हेडिंग इन द डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू द future of things and how things stand. NFTs के around, in short, NFTs is like a digital certificate of uh, any product, and it says that this item or this product is for real and I am the sole owner of it. इसे कहते हैं एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन, ठीक है। अब एनएफटी से रिलेटेड, अब इन डेप्थ एनालिसिस की अगर हम बात करें तो हम काफ़ी सारे डिबेट्स और एक्सपेक्टेशंस और यूजेज और क्यों ये इतने महंगे महंगे जाते हैं, इस पे जाएंगे।
By the way, if you've just joined the app and if you are a new depositor, आपके लिए एक ऑफर है, गिव अवे ऑफर है, और वो ये कहता है कि आपको मेरी तरफ से 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, बिल्कुल फ्री मिलेंगे। आपने कुछ नहीं करना है, आपने खाली $3 डिपॉजिट करने हैं अपने जीबिट अकाउंट में। और डिपॉजिट तो आप खैर वैसे भी करोगे, आज करो, कल करो, जब भी करो। अगर आप जीबिट पे आए हो, आपने डिपॉजिट अब तक नहीं करा है, तो कभी ना कभी तो आप डिपॉजिट करोगे ही। पर जब आप डिपॉजिट करोगे तब मैं ये श्योरली नहीं कह सकता कि ये ऑफर चल रहा होगा या नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ डिपॉजिट कर लो। और अभी 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे मेरी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट टाइम डिपॉजिटर। ये ऑफर चल रहा है, इसको मिस आउट मत करो, मत करो, मत करो। राइट। अब बात करते हैं अगेन रिगार्डिंग एनएफटीज, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट रियली इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन अराउंड एनएफटीज, दैट व्हाई डू दे सेल फॉर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज। ठीक है, आपने देखा होगा काफ़ी सारे चीज़ों के डिजिटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मिलियंस के बिकते हैं। क्यों बिकते हैं वो मिलियंस के, ये मैं आपको अब बताऊंगा। तो भाई उनके एनएफटी के प्राइस हाई होने का रीज़न टेक्नोलॉजी ही नहीं है खाली, मल्टीपल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, जिसको मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। साइकोलॉजी हो गई, स्कारसिटी हो गई, हाइप हो गया, स्टेटस हो गया, ये सारी चीज़ों को मिला के एक कॉम्बो बनता है, जिसकी वजह से ये सारे एनएफटीज महंगे बिकते हैं बहुत। ठीक है, मिलियंस के जाते हैं, आपने सुना होगा, देखा होगा, या पढ़ा होगा। ठीक है, तो नंबर वन कि एनएफटीज इतने महंगे क्यों बिकते हैं, सबसे बड़ा रीज़न है स्कैरसिटी या वैल्यू। यूनिक एसेट्स हैं ऑब्वियसली, और जब कोई चीज़ अगर रेयर हो तो उसके साथ तीन चीज़ें ज़रूर होती हैं। सबसे पहली बात, उसकी डिमांड हाई होती है और सप्लाई तो लो होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, प्राइस ऑटोमेटिकली हाई ही रहता है, क्योंकि डिमांड हाई है और सप्लाई लो है, तो प्राइस हाई रहता है। अब सेम लॉजिक जो अगर है, अगर आप अप्लाई करें, चाहे वो रेयर शूज हो गए या स्नीकर्स हो गए या रेयर कार्ड्स हो गए, आर्ट वर्क हो गया या रेयर वॉच हो गई, तो ऑब्वियसली उनके डिमांड हाई रहती है, सप्लाई कम है क्योंकि वो रेयर है ऑब्वियसली, और उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो एनएफटीज जो होते हैं वो बहुत रेयर और स्कैरसिटी होती है इनकी एक, इसलिए इनकी वैल्यू उस पे डिपेंड करती है। ठीक है, इसलिए दे आर हाई, हाई वैल्यू। दूसरा एक, जिसे कहते हैं ना कि क्रिप्टो वर्ल्ड में एनएफटीज बेसिकली एक फ्लेक्स कल्चर का काम करते हैं। फ्लेक्स करना यानी डिजिटली आप फ्लेक्स कर सकते हैं कि जैसे लोग इंस्टाग्राम पे अपने लग्जरी बैग्स, जैसे फॉर एग्जांपल काफ़ी लोग करते हैं ऐसा, मैंने देखा है काफ़ी पॉपुलर जो फीमेल इन्फ्लुएंसर्स हैं स्पेशली, जो फैशन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, वो अपने लग्जरियस बैग्स को शो ऑफ करते हैं। क्यों करते हैं, जिस भी रीजन से करते हैं, करते होंगे खैर, पर उसी तरह से क्रिप्टो में लोग अपनी एनएफटी प्रोफाइल पिक्चर्स को फ्लेक्स करते हैं। एक हाई वैल्यू अटैच होती है कि ये प्रोडक्ट का डिजिटल कॉपी या डिजिटल ओरिजिनल कॉपी खाली मेरे पास है आज। तो उसको कहते हैं फ्लेक्स करना, चौड़ दिखाना एक तरह से। ठीक है, कि मैं ही ओजी हूं, मैं ही रिच हूं, या मैंने ही, मेरे पास ही इस प्रोडक्ट का एनएफटी है पूरी दुनिया में। किसी के पास किसी के पास इसकी फोटो हो सकती है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो मेरे पास है। तो इससे क्या होता है कि ये जो सोशल स्टेटस को प्राप्त करने का जो ये एक्टिविटी है या ये इमोशन है, इसकी वजह से प्राइस एनएफटीज का काफी हाई पुश हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है,
तो दूसरा रीजन हो गया फ्लेक्स कल्चर जिसे कहते हैं। तीसरा, एनएफटीज को ऑब्वियसली काफी सारे सेलिब्रिटीज ने और इन्फ्लुएंसर्स ने हाइप दिया है अपना। बॉलीवुड सेलेब्स हो गए, मैं बताऊंगा बॉलीवुड सेलेब्स भी इसमें कैसे एनएफटीज किसने किस चीज का एनएफटी लिया है। क्रिकेटर्स ने लिया है काफी, एक्टर्स हो गए, एथलीट्स हो गए। तो इससे क्या होता है कि किसी भी इन एनएफटी को अगर ये प्रमोट करते हैं तो क्या होता है कि प्राइस जो है वो ऊपर जाता है, स्काई हाई जाता है, स्काई रॉकेट करता है। तो इसे जो है ना, ये कॉम्बिनेशन है हाइप का बनाने का और एक फोमो पैदा करने का, उसकी वजह से इसके प्राइस बहुत मिलियंस में चले जाते हैं। तो ये हो गया तीसरा रीजन। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट रीजन पे जिसे कहते हैं स्पेक्यूलेशन। आज की डेट में आप अगर एक एनएफटी को बाय करते हैं किसी भी चीज के, फॉर एग्जांपल वो क्रिकेटर रोहित शर्मा का T20 वर्ल्ड कप में जीता हुआ गोल्ड मेडल है, वो एक ही है दुनिया में, और वो अगर आप उसका एनएफटी लेते हैं तो आज अगर आप सोच रहे हैं कि मान लीजिए आज ये 5 लाख का है, कल को वही वाला 50 लाख का भी हो सकता है। तो इसीलिए लोग चाहते हैं कि इसे जल्दी ले लो, इसको खरीद लो, क्योंकि ये ही नेक्स्ट बिग चीज है और इसके बाद इसके जैसा कोई और प्रोडक्ट दुनिया में नहीं है। और इसकी वजह से प्राइस जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिसके बारे में मैंने पहले डिस्कस एक बार करा हुआ है लाइफ पे, मुझे याद है। जैक डॉर्सी ने जब सबसे पहला ट्वीट करा था अपना, राइट, तो उन्होंने क्या ट्वीट करा था, जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर। ठीक है, दिस वाज वे बैक इन 2006। ओके, जब उन्होंने ये अपना सबसे पहला ट्वीट करा था, कि ऑब्वियसली वो ट्विटर के को फाउंडर थे, तो ये ट्वीट उन्होंने 21 मार्च 2006 को करा था। और इस ट्वीट का एनएफटी बनाया गया था इथीरियम ब्लॉकचेन पर। ठीक है, इथीरियम पर इसका ब्लॉकचेन, इथीरियम का इसका एनएफटी बनाया गया। और ये इवेंचुअली 2021 में इसका एनएफटी, आप मानेंगे नहीं कितने का बिका था, $2.9 मिलियन का ये एनएफटी बिका था। ठीक है, और खरीदने वाले भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ऑब्वियसली कोई किसी ने अगर बिका है तो किसी ने खरीदा ही है। लेकिन सीना एस्तावी नाम के एक क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर ने इसको खरीदा था, और $2.9 मिलियन का खरीदा था, मैंने जैसे आपको बताया। और तब ये बना था हेडलाइन की, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्वीट सेल्स फॉर मिलियंस, वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्वीट सेल्स फॉर मिलियंस। तो ये जो है एनएफटी का मार्केट में आने का जो बबल पैदा हुआ था, शुरू हुआ था, उसका पीक मोमेंट था ये। यहाँ से काफी चीजों की शुरुआत हुई, लोग काफी चीजों का एनएफटी करवाने शुरू हो गए। पर जब 2022-23 में इसके बारे में एक और थोड़ा सा, अब इतना बता ही दिया तो बता देता हूँ। 2022-23 में जब एस्तावी ने एनएफटी को रीसेल के लिए डाला, राइट, उन्होंने 2006 में उसने ट्वीट करा था, 2021 में इसने खरीदा था, 2022-23 में इसने इसको एनएफटी को रीसेल पे डाला। ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मेरे को $2.9 मिलियन का इसने खरीदा था। ये एक्सपेक्ट कर रहा था $48 मिलियन। ठीक है, ये एक्सपेक्ट कर रहा था। बिड्स आए $280 तक से लेके $7,000 तक के। तो आप समझ सकते हैं पूरी
इसकी 99% मार्केट क्रैश हो गई। ठीक है, अब इस बंदे का तो काफी नुकसान हो गया, बट ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि रीजन जितने कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। एनएफटी हाइप बर्स्ट हो गया था, मार्केट डाउन चला गया था, रेयर ट्वीट की कलेक्टर वैल्यू जितनी भी थी वो सस्टेनेबल थी नहीं, और यूटिलिटी तो खैर जीरो ही थी, इससे कुछ फायदा तो किसी का हो नहीं रहा था, राइट। और हाइप बना, फोमो हुआ लोगों को, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली एक क्रैश साइकिल आ गई। और ये एनएफटी का जो पूरा इंसिडेंट मैंने आपको बताया, इससे हम क्या सीखते हैं कि एनएफटीज की जो भी वैल्यू होती है वो हाइप, डिमांड और परसेप्शन पे चलती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई गारंटीड इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसमें इवन सेलिब्रिटीज की जो एनएफटीज हैं वो भी क्रैश कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे एनएफटीज वैल्यूएबल होते हैं। आपको देखना पड़ेगा कि आप जो चीज़ खरीद लें उसके साथ एक यूटिलिटी वैल्यू अटैच्ड है, या उससे कुछ मेजर अटैच है। इसमें कुछ ऐसा अटैच था नहीं, कुछ फायदा तो दे नहीं रहा था किसी को। तो मार्केट काम होते ही ऑब्वियसली वो 2.9 मिलियन से ऑलमोस्ट जीरो ही बन गया, वो एक फर्स्ट ट्वीट, राइट। तो यही कहने का तात्पर्य है, ये एक एग्जाम्पल था ताकि आपको समझ आए कि हर एनएफटी भी खरीदने लायक नहीं होता है, हर एनएफटी महंगा भी नहीं होता है। तो यही बात है कि लेकिन ऐसा होता है कि काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट यूटिलिटी वाले एनएफटीज जो लोग ले लेते हैं, उनकी वैल्यू 5 लाख से 50 लाख पर भी जा सकती है, राइट। तो एनएफटीज के अराउंड आज का हमारा टॉपिक है, और हम इसमें काफ़ी चीज़ें देखते रहेंगे। काफ़ी टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे दैट आर इन एंड अराउंड एनएफटीज, एंड दैट विल इन्हांस योर नॉलेज रिगार्डिंग टू एनएफटीज। क्या एनएफटीज हैं, हमने इन डेप्थ एनालिसिस इनका करना है। इसके अराउंड जितने भी डिबेट्स और टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। अब क्योंकि एनएफटीज की बात हो रही है, मिलियंस की बात हो रही है, तो हम एक बार ज़रूर देखेंगे कि दुनिया के सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव एनएफटीज कौन से रहे हैं, हिस्ट्री क्या बताती है, और कितने अमाउंट के रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके पीछे कोई यूटिलिटी वैल्यू अटैच थी भी या नहीं थी, लोगों ने ऐसे ही ले लिया और बाद में रिग्रेट करा। तो ये हम एक बार देखेंगे।
Hello to user. Uh, Sorry, I don't have your. तो टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटीज एवर के लिस्ट मेरे सामने है. एंड ऑन टॉप ऑफ इट इज द मर्ज. द मर्ज इज द नेम ऑफ यू नो दिस फर्स्ट एनएफटी. और ये एनएफटी पाक नाम के आर्टिस्ट का है, और ये सबसे एक्सपेंसिव एनएफटी सेल रही है इसकी. इट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इट वाज सोल्ड फॉर अराउंड, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, 2021 में ये बिका था. और ये बिका था 91.8 मिलियन डॉलर्स का. दैट इज ऑलमोस्ट 100 मिलियन, राइट. इट वाज सोल्ड फॉर 91.8 मिलियन डॉलर्स. और ये एक सिंगल इमेज नहीं था. ये दिस वाज थाउजेंड्स ऑफ मास यूनिट्स का कॉम्बो था बेसिकली, जो कलेक्टर्स ने इवेंचुअली बाय करे. सो ये एनएफटी पाक नाम के आर्टिस्ट का है, और सबसे एक्सपेंसिव एनएफटी रहा है दुनिया में. सेकंड अगर हम बात करें तो एवरी डेज, या द फर्स्ट 5000 डेज इज द नेम ऑफ द सेकंड एनएफटी. 69.3 मिलियन डॉलर्स का ये बिका था. बीपल जो कि एक डिजिटल आर्टिस्ट है, उसका मशहूर काफी एनएफटी है ये, जो 5000 इमेजेस का बेसिकली था. क्या एक 5000 इमेजेस का कोलाज था, और सोल्ड हुआ 69.3 मिलियन डॉलर्स का. और इस सेल ने बेसिकली एनएफटी आर्ट को मेन स्ट्रीम और ट्रेडिशनल वर्ल्ड के आगे में लेजिट बना दिया एक तरह से, और शुरुआत एक कर दी कि इतने महंगे भी आर्ट वर्क बिक सकते हैं. उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वाले की. थर्ड इज क्लॉक, विच वॉज सोल्ड फॉर 52.7 मिलियन डॉलर्स. पाक और विकीलीक्स के फाउंडर बेसिकली जूलियन असांगे का कोलैबोरेशन एनएफटी था ये. इस पीस में एक टाइमर था बेसिकली, जो असांगे के जेल में बताए दिन काउंट करता था. परचेज मनी जितने भी थी इसकी असांगे के लीगल डिफेंस के लिए वो यूज हुई, और इट वाज अराउंड 52.7 मिलियन डॉलर्स का ये बिका. इसके अलावा जितने भी हैं वो इससे ऑब्वियसली कम है. आई विल लुक एट मोर एनएफटी रिलेटेड टॉपिक्स. User 873428 says hello, hello to you. I hope that you are liking the topic for the day. That is
NFTs, and we are doing an in-depth analysis of NFTs, right? If you are tuned live, hello to you, and I hope that you like what we are discussing. It's almost been an hour. I have been talking about NFTs and what do they stand for, what exactly are they, और मैंने आपको भी बताया वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs कौन से रहे हैं, राइट? इस बारे में मैंने अभी डिस्कशन करा है, और इसके बाद हम NFT रिलेटेड और टॉपिक्स देखेंगे व्हेन आई come back from this very short break, and we will discuss about all these topics one by one, and that are related to NFTs, that are related to whether you should buy NFTs or not, should you spend lakhs on it or not, uh, are they the next big thing, or is it just hype, or it is adapting to the times, it is switching towards a more utility driven NFT kind of road. We will look into that when I come back from this very short break. Till then, stay tuned, and I will be back in the next few minutes.
Welcome to all the users who are streamed in on the Zbit app as well as on YouTube live streaming. Today, we are discussing a really interesting topic that has to deal with NFTs and what exactly NFTs are. We are doing an in depth analysis of NFTs, and I hope that you somehow now have an idea about what NFTs are. Before going into a short break, I discussed about non fungible tokens, right? That is exactly what NFTs stand for. They are basically digital certifications of ownership of any product. It could be artwork, it could be a design or anything really on the internet, and you are basically sole owners of it. It defines that this product is for real and I am the owner of it. तो इसको कहते हैं NFTs बेसिकली। तो NFTs पे अब NFT के रिलेशन में हम काफ़ी सारे ऐसे आज टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो लोगों के डाउट्स होते हैं बेसिकली। और वो डाउट्स किस तरह के होते हैं, जैसे शुड यू इन्वेस्ट ऑन NFTs और नॉट, शुड एनीवन स्पेंड lakhs on NFTs or not। हमने देखा बिफोर गोइंग इन द ब्रेक, आई डिस्कस्ड which are the most expensive NFTs ever, और अराउंड 91 मिलियन का मैंने आपको एक NFT बताया, जिसमें जिसका नाम था द मर्ज। 91.8 मिलियन डॉलर्स का ये था, जिसके बारे में मैंने बताया। मैंने आपको एवरी डे इज द फर्स्ट 5000 डेज के बारे में भी बताया। इट वाज सोल्ड फॉर 69.3 million, so these were the top two. And so we will now discuss whether you should buy NFTs worth all these lakhs or not, when you should buy them, or whether you should not buy them at all. That we will discuss right now. uh, इसमें हम देखेंगे कि जितने भी डिबेट्स होती हैं इसको इन्वेस्टमेंट के पर्पसेस से खरीदने के बारे में, या इसको क्योंकि हाइप बन रही है, स्पेकुलेशन बन रही है उसलिए खरीदने के वास्ते, या स्टुपिडिटी में भी काफी लोग NFTs खरीदते हैं, राइट। लॉट ऑफ NFTs आर देयर फॉर एंड दे सेल ऑफ आल्सो एज वेल फॉर अ लॉट ऑफ मनी, राइट। बट ये पूरी डिबेट को हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले देखते हैं NFT इन्वेस्टमेंट वैलिड तभी है अगर आप जिसकी NFT की जिस आर्टिस्ट की आप NFT करवा रहे हो, किसी गाने की या कुछ, तो वो आर्टिस्ट फेमस होना चाहिए, ठीक है। उस प्रोजेक्ट का जिसमें आपने NFT करा है उसकी कम्युनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात जो काफ़ी सारे NFTs के मामले में नहीं भी देखा जाता है वो ये होती है यूटिलिटी नहीं होती है। तो आपके NFT में कोई ना कोई रियल यूटिलिटी होनी चाहिए, या तो वो मेंबरशिप हो, या वो कुछ स्पेशल आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रहा हो, या वो कोई गेमिंग आइटम हो या स्टिकर हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट हैज सम रियल यूटिलिटी अटैच टू इट, ठीक है। उसके अलावा ब्रांड या सेलिब्रिटी अगर उसको बैक कर रहा है तो वो बंदा या बंदी जेन्युइन हो, वो सेलेब जेन्युइन हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन थोड़ा बहुत हो, इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है अगेन। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि यही वाले इसी तरह के ये सारी चीज़ें जब टिक होती हैं तभी आप एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आप NFT ले सकते हैं। तभी ये NFTs अपनी वैल्यू होल्ड कर पाएंगी। आपको जैसे मैंने आपको बताया कि जैक डॉर्सी का जो फर्स्ट ट्वीट था, जो ट्विटर के को फाउंडर थे, उन्होंने ट्वीट करा था कि कुछ ट्वीट करा था जो कि उनकी फर्स्ट ट्वीट था, नॉट वेरी ग्रेट एज वेल, राइट। एंड इट वाज सोल्ड फॉर 2.9 मिलियन डॉलर्स, राइट। और जिस बंदे ने उसको खरीदा था, इवेंचुअली जब उसको बेचने के लिए गया, रीसेल पे डाला उसने, तो उसकी वैल्यू जो है वो 99% गिर गई, ठीक है। तो वर्थलेस ही हो गया ऑलमोस्ट। वो जिसने जितने का उसने खरीदा उसका नुकसान हो गया। इसलिए इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें कि आपका NFT वैल्यू होल्ड कर सके और टाइम के साथ अप्रिशिएट भी हो सके, सबसे बड़ी बात। और अगर वो टाइम के साथ अप्रिशिएट हो तो फिर आपके लिए वो और बेटर है।
नहीं होता है तो एटलीस्ट वो अपनी वैल्यू उतनी जितने का वो था उतनी वो होल्ड करे, ये इंपॉर्टेंट है। काफी लोग जो हैं वो एनएफटीज को स्पेकुलेशन की वजह से या हाइप की वजह से खरीद लेते हैं, ठीक है। काफी सारे एनएफटीज बिकते ही इसलिए हैं क्योंकि उनके अराउंड इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है या फोमो क्रिएट हो गया लोगों के दिमाग में, या ट्रेंड चल रहा है, या लोग सोचते हैं कि अगर आज 50,000 का मिल रहा है, कल को ये 5 लाख का बिकेगा, या आज 5 लाख का मिल रहा है तो कल को 50 लाख का बिकेगा, इसलिए खरीद लेता हूँ। तो अगर आज आप होप कर रहे हो कि कोई आपसे ज्यादा पैसे दे दे इस चीज में, तो ये एक तरह का गैम्बल है, ये एक तरह का आप पंट ले रहे हो मेरे हिसाब से। और ये तो आप फिर वही वाली बात आ गई कि कभी भी ये एक्सप्लोड भी कर सकता है और कभी जीरो भी हो सकता है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट आप अगर स्पेकुलेटर हैं तो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ अ वेरी रिस्की गेम, राइट। एंड यू शुड इन्वेस्ट और थिंक ऑफ बाइंग थोड़ा कॉन्शियसली, थोड़ा दिमाग लगा के। अगर आपको लगता है सही है तभी आप लें इसको। उसके बाद काफ़ी लोग सही कहूँ तो स्टुपिडिटी में भी अब एनएफटीज खरीद लेते हैं। अब कैसे लेते हैं ये मैं आपको बताता हूँ कि इसके भी कोई कोई लोग जो हैं वो स्टुपिडिटी एक तब बन जाती है जब लोग किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देते हैं जिसका कोई मीनिंग ना हो, जिसके पीछे कोई यूटिलिटी वैल्यू अटैच ना हो, जिसके डेवलपर्स अननोन हो, या खाली हाइप ही चल रही है और कुछ हवा ही हवा है, बात है ही नहीं कुछ असल में, ठीक है। और ये वो वाले यूजर्स भी हो सकते हैं जिनको इवेंचुअली फिर रीसेल वैल्यू मिले ही ना, और जितने का वो खरीदें वो पूरा उनके जेब से जाए और नुकसान हो जाए अलग। तो ये जितने भी तरह के एनएफटीज होती हैं ये लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं करते हैं, और इनकी कोई लिक्विडिटी नहीं होती, इनकी वैल्यू क्रैश होना तय है, इनके साथ स्कैम्स के चांसेस बहुत हाई हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एनएफटीज पे लाखों खर्च करना इज mere stupidity, right? So I hope that you understood all these three you know emotions when it comes to buying NFTs, whether it is for investment purpose, whether it is just because there is speculation, or whether you're just buying out of stupidity and not knowing the project and not having, investing a project that has no utility value attached to it, right? uh, आप समझ जाइए ये कि एनएफटीज के लाखों की जो ये वर्थ होती है वो खाली तभी होती है जब प्रोजेक्ट सॉलिड है, यूटिलिटी सही में है उसकी, कुछ टीम अच्छी है जो इन्वॉल्व है इस पूरे एनएफटी के सेल में, इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज केस है और एक्चुअली में उसकी डिमांड है। इट शुडंट बी as if you are the only one in the world who's interested in getting an NFT of some product, right? uh, ये समझने की ज़रूरत है क्योंकि बाकी एनएफटीज जितने भी 95% हैं वो फोमो और हाइप और स्पेकुलेशन और स्टूपिडिटी इन सारी चीज़ों में ज़्यादा हैं। तो it's important that if you buy an NFT at some point of time, you buy it only after research. You buy it not on the basis of the speculations around it and the hype that's being built around it. Uh, लाखों खर्च करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि रिस्पॉन्सिबली खर्च करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये मेरा एक शॉर्ट कंक्लूजन था। और when we talk about NFTs and the topic that we have for today, right? NFTs, and we're doing an in-depth analysis. If you've just joined, I would like you to know that I have 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe that I am giving out for absolutely free of cost. अगर आपको अपना
क्रिप्टो जर्नी शुरू करनी है ऑन जीबिट, तो प्लीज डिपॉजिट करें खाली $3। ये दैट इज द मिनिमम अमाउंट दैट वी हैव सेट। इट्स नॉट अ बिग अमाउंट। और $3 या उससे जितना भी ज़्यादा आप इन्वेस्ट करना चाहें, डिपॉजिट करना चाहो, आप कर सकते हो। अगर आप पहले टाइम डिपॉजिटर हो तो ये ऑफर लिए बिना मत जाना, क्योंकि आप डिपॉजिट तो कभी ना कभी करोगे ही। अभी करोगे या बाद में करोगे, तब शायद ये ऑफर नहीं चल रहा होगा। अभी चल रहा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ, डोंट मिस आउट ऑन इट and buy as soon as possible, right? In deposit as soon as possible and get these 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free of cost.
तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत पुअर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के तौर में एनएफटीज में इन्वेस्ट करते हैं। कई बार स्टुपिडिटी का एग्जांपल जैसे मैं आपको बता रहा था, एनएफटीज के मामले में काफ़ी लोग ये गलतियां करते हैं। उसी में अगर मैं आपको बताऊं तो एथर रॉक करके एक क्लिपार्ट रॉक है, विच इज़ अगेन ऐसे काफ़ी कम। देर आर ओनली 100 रॉक्स लाइक दिस दैट एग्जिस्ट। these are the rocks, if you can see on your screen. ये रॉक्स जो हैं जब इसकी एनएफटी कराई गई तो 1.3 मिलियन डॉलर्स तक की एनएफटी हुई, लोगों ने इतना लगाया है। सो इन माय व्यू इट इज कंप्लीट स्टूपिडिटी। एंड व्हाई इट्स फनी इज बिकॉज इट्स लिटरली जस्ट अ JPEG of a rock. It's just a JPEG file format image of a rock. And the worst part and the most funniest part here is that uh, all rocks look like they're very much the same. It's just that the color of the rock varies, right? तो अगर आप देखें तो ये सारे रॉक एक जैसी लग रहे हैं, बस इनका कलर अलग है, लेकिन लोगों ने इनकी भी एनएफटी करवाई हुई है एक एक की। तो it's very funny and it's sad actually. And there is absolutely zero utility attached to these rocks, and there is zero art, there's no creativity involved as well, there's no explanation as well. But they are only expensive because only 100 like these exist. And cryptos flex culture जिसके बारे में मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, it kind of went wild over this. And it's a completely WTF situation in my view. People have bought this for $1.3 million, and I don't know who has this much amount of money and why are they spending it on such stuff. So this was one of the NFTs that I was talking about. That people have done out of stupidity. In my view, it's just a piece of rock that not even a piece of rock. It's actually a JPEG, right?
People are selling it for, buying it for 1.3 million as well. So that's really sad. एंड ऐसे एक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे, आई हैव दिस एंटायर लिस्ट ऑफ पुअर एनएफटी डिसीजंस. देयर इज दिस बोर्ड एप याक क्लब एज वेल, जिसमें लोगों ने एनएफटीज करवाए हैं. एंड व्हाई इट्स फन इज बिकॉज इसमें एप्स हैं, मंकीज हैं बेसिकली, इस तरह के. एंड दे हैव utilized these monkeys and made NFTs out of them, and they've made apes looks like they've partied really hard. And it's nothing but meme energy and flex culture again. That is a combination of both these things. And celebrities buying apes made it even more absurd. But the fun factor is here is that it's again an exclusive club that meets all kinds of internet sarcasm and all this stuff. But again, people are buying these NFTs on the internet, and it is again really sad that people are investing their hard-earned money on something that has no value attached to it, no utility attached to it. Now, with that, I'll look at a few more topics related to NFTs. तो अगर हम करंट सिचुएशन एनएफटीज की देखें, सिंस 2026 द सिचुएशन हैज काइंड ऑफ डिप्ड, if you see, in my view. And the numbers are telling me this. It's not that मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ ये कुछ. The market has seen a downfall from the old boom that was there in the fields of NFTs.
2021-22 में एक बढ़िया हाइप बना था एनएफटीज के बारे में। बट उसके बाद से एनएफटी मार्केट काफ़ी जो है वो श्रंक कर गई है, काफ़ी घटी है, और ट्रेडिंग वॉल्यूम्स गिर गई हैं, मार्केट गिर गई है, बहुत चीज़ें हुई हैं। 2024 25 में ये ज़्यादातर होना शुरू हुआ है, और सिग्निफिकेंटली फ़र्क आया है फ्रॉम व्हाट द मार्केट वाज़ वे बैक इन 2021, 2022 टू व्हाट चेंज वी सॉ इन 2024, 2025, राइट? नाउ काफ़ी एनएफटीज जो वंस बिग प्राइजेस पे जाती थी, वो अब काफ़ी नॉर्मल लो वैल्यू डिजिटल इमेजेस तक बन गई हैं। एंड जो ये स्पेकुलेशंस होते थे अराउंड एनएफटीज, वो अब काफ़ी ज़्यादा लेवल तक घट गई है। अगर आप देखें तो काफ़ी सारे सेलेब्स ने भी इसमें इन्वेस्ट करा था, और काफ़ी सारे सेलेब्स ने इसमें अपना रोल अदा करा था, प्रमोट भी करा था, हाइप भी बनाया था। लेकिन अब इवेंचुअली अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो पहले जैसी नहीं रही है एनएफटीज की, व्हेन इट कम्स टू एंड दैट हैज बीन द केस सिंस 2024, 2025, राइट? 21-22 वाला बूम दोबारा आया ही नहीं है एक तरह से। 2026 में क्या, अभी अभी तो ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, 16-17 दिन ही हुए हैं 2026 को शुरू हुए। वी आर जस्ट इनटू जनवरी एट द मोमेंट, बट there has been some kind of a positive movement, if you ask me. And if you see and analyze on your own as well, statistically the market has shown some kind of an improvement. Prices जो हैं वो थोड़े से ऊपर गए हैं, और ट्रांजैक्शंस की भी जो वॉल्यूम्स है वो भी काफ़ी बड़ी है। और इवेंचुअली अगर आप देखें तो ये आपको एहसास होगा कि कुछ जो एस्टैब्लिश एनएफटीज हैं बेसिकली, उनमें वो थोड़े एक्टिव रहे हैं ड्यूरिंग दिस जनवरी वाला जो पीरियड रहा है उसमें। और बस इतना ही देखने को मिला है, इससे ज़्यादा कुछ मतलब प्रभाव है नहीं मार्केट पे अभी। मार्केट कंटिन्यूज टू बी लो फॉर एनएफटीज। इट्स वेरी अनलाइक द 2021, 2022 पीरियड जब हाइप बन रहा था। और ओवरऑल लिक्विडिटी भी काफ़ी ज़्यादा लो है इस मार्केट में इस वक्त, और न्यू बायर्स जो एनएफटीज के ऑब्वियसली वो बहुत कम आ रहे हैं। maybe NFTs are progressing towards a different future. We will have to see. Uh, there is some kind of recovery, but there is a lot of work to be done when it comes to NFTs, right? ये 2026 की जो सिचुएशन है और अभी तक जो रही है रिसेंटली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप इसमें एक्सपर्ट्स की माने तो एक्सपर्ट्स का कहना है कि एनएफटीज जो हैं वो अब प्योर हाइप वाले सिचुएशन और स्पेकुलेशन वाले पीरियड से निकल कर अब यू नो यूज केस वाले एनएफटीज के डायरेक्शन में जा रहे हैं। शिफ्ट आया है एक उस मार्केट में। गेमिंग एनएफटीज हो गए, टिकट्स हो गए, मेंबरशिप पासेस हो गए, प्रोडक्ट्स दैट एक्चुअली हैव सम काइंड ऑफ यूटिलिटी एट जिसे कहते हैं ना, बकवास बहुत ज़्यादा हो गई है। बट एनएफटीज का आना अब जो है वो यूज केसेस के लिए ज़्यादा आ रहा है। और डिजिटल आइडेंटिटीज हो गई, रियल वर्ल्ड यूज केस वाले जितने भी एनएफटीज हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। और साथ में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस और एनएफटी कॉम्बोज साथ में इनका आने के चांसेस और हैं। और इन सब एरियाज में बेसिकली जो है वो रियल वैल्यू दिख रही है रादर देन जस्ट आर्ट स्पेकुलेशन। तो दिस इज द सिनेरियो व्हेन इट कम्स टू एनएफटीज, राइट?
and this is the latest when it comes to NFTs. Now, if you are a new user who has just joined, I would like you to know that I am giving you 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side absolutely free of cost. All you have to do is just deposit, you know, you just have to deposit $3 into your own Zbit account, and you will be getting 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side absolutely free. This is just for new depositors, and this is only and only for new depositors in the Zbit, on the Zbit live streaming. I am announcing this that I am giving you 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side absolutely free of cost. Don't miss out on this opportunity, and I hope that you are also enjoying your time on the zbit.com app, as well as on the you've explored the market as well. The market is fluctuating consistently. Bitcoin has again come back to 95,000. It's seeing some kind of a steep fall from the last in the last few days. It had gone to 97,000 as well. With that, we will also look at how other coins are doing. How is Ethereum doing? It is currently at 3326, and we read a news yesterday that said that there is a prediction of Ethereum going past $15,000 of before 2027. And I found it really unbelievable that there are expectations of ETH going till there, but you never know, right? Anything can happen in the world of cryptocurrency. The markets are such, the nature of the market is so volatile, so complex, and all factors, if they play their own part, ETH might go to uh, you know $15,000 as well by the end of the year. Who knows, right? Uh, on that note, I will also look at how XRP is doing. XRP is currently at 2.0525323, 2.052325. It's fluctuating, and let's now also look at Solana. Solana is again back to 142.4540. That's how it's doing. And look at ADA. ADA is at 0.39. All of these coins. If any one of you has any question regarding how these numbers stack up, or any particular coin as such, we can have a look at all those coins and look at what the situation of that coin is
during this point of time, and why the situation is such, right? If it's growing, why it's growing. If it has kind of become stable, why has it become stable? We can discuss that, right? Now, if you look at Dodge is at 0.13719 again, and if you look at any other coin that you want me to look, I can look at that as well. This is smartphone again. It's a new coin. So if you just joined the live stream, we are discussing about the topic of the day, that is NFTs, and we are doing an in-depth analysis of NFTs. Before going, into a break, I had discussed about what NFTs actually stands for. It stands for non fungible token, right? And we discussed about investment, speculation, and stupidity as well when it comes to these NFTs. Uh, uh, and this is, talking about the kind of investments people make into NFTs, and they kind of invest into NFTs without having any knowledge of the project, and without having any kind of understanding of, if even that NFT holds is there for a reason or not, if it's even there uh, with a use case behind it, or any utility value attached to it. A lot of NFTs are not having any kind of utility value attached to it, and still people buy them. They buy them in and spend lakhs on them, and we discussed that as well. I explained you how, which is the most expensive NFT in the world so far. It was the merge. It was a, NFT, पाक नाम के आर्टिस्ट का है, और ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव NFT है in the world. It's a record for its sale, and it was sold at around $91.8 million in 2021, right? एंड उससे पहले मैं आपको बताया कि NFTs जो हैं वो क्या प्रूफ करते हैं। NFTs प्रूफ करते हैं कि आपकी एक, ये जो मेरे पास प्रोडक्ट है जिसका NFT मेरे पास है, ये असली प्रोडक्ट है, और ऐसा एक प्रोडक्ट खाली मेरे पास ही है दुनिया में, राइट? डिजिटल ओनरशिप जो है वो NFTs प्रूफ करते हैं। A lot of celebs also have invested in NFTs and hyped up NFTs in the recent past. We have discussed that as well. Flex culture के बारे में भी हमने डिस्कस करा, जिसकी वजह से काफ़ी लोग NFTs खरीदते हैं। और उसके अलावा हमने डिस्कस करा कि इसके साथ जो स्कैरसिटी वैल्यू अटैच्ड होती है NFTs के साथ, that is a major factor as to why people think that it might just be very rare, this product in the whole world, and so I need to buy this product before anyone else buys it and buys it. People also buy it for cheaper and think that it'll go for an expensive price in the future, but that often does not happen because there is no real case use case attached to it, or any fundamental use case attached to it, and so it becomes really difficult for people to then sell it off, and it's a bad investment decision in my view. That is again something that we discussed. Now, a lot of people have bought some uh, weird NFTs done as well. I gave you an example of some of them. One was that of the, Jack Dorsey tweet. I showed you an example of a rock that is actually a JPEG image of a rock, but that too has gone for 1.3, 1.2 million, and there is no utility value attached to it, but people still buy out of stupidity, out of having no knowledge behind it, of
any use case of its, but people still buy it, right? जैक डॉर्सी ने जब ट्विटर का सबसे पहला ट्वीट करा था, उसने अनाउंस करा था कि जस्ट सेटिंग अप माय ट्विटर, 2006 में उन्होंने एक ट्वीट करा था। और उनके ट्वीट का एक बंदे ने, एक महानुभाव ने एनएफटी करवाया। और जब एनएफटी उन्होंने करवाया तो उन्होंने 2.9 मिलियन डॉलर्स का इसको खरीदा। और जब उन्होंने 2.9 मिलियन डॉलर्स का इसको खरीदा, इन इथीरियम ब्लॉकचेन पे ये बना था। और जब उन्होंने खरीदा, जिस इस बंदे का नाम सीना इस्तावी था, ये क्रिप्टो एंटरप्रेन्योर था जिसने इसको खरीदा था। पर जब उसने खरीदा और फिर जब उसको वो रीसेल करना चाहता था, तो उसके वैल्यू में मैसिव गिरावट आ गई, 99% तक की गिरावट आ गई। तब ये हेडलाइन भी बहुत चल रही थी कि वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्वीट सेल्स फॉर मिलियंस। ठीक है, और जब उन्होंने खरीदा था इसको 2.9 मिलियन डॉलर्स का, उन्होंने सोचा था कि मैं इसको कम से कम 48 मिलियन, 50 मिलियन डॉलर्स का बेचूंगा। और बिका, और जो बिड्स जो आ रहे थे वो आ रहे थे 300 से लेके $7,000 तक के खाली। तो 99% प्राइस फॉल हुआ था, क्योंकि इसमें मेजर काफ़ी चीज़ें हो गई थी। एनएफटी हाइप जो था इसके अराउंड वो बर्स्ट कर गया था। इसमें इनके ट्वीट में कोई यूटिलिटी वैल्यू अटैच नहीं रही थी, राइट? एनएफटी का मार्केट हाइप बर्स्ट हो गया था, मार्केट डाउन हो गया था, क्रैश हो गया था। एक रेयर ट्वीट तो होगा, लेकिन इसके पीछे कोई यूज केस भी तो होना चाहिए ना, वो तो था ही नहीं। तो यूटिलिटी ज़ीरो थी, और ऐसे केस में प्राइस गिरना उस एनएफटी का बहुत ऑब्वियस था। और इस एनएफटी से हमें ये सबक मिलती है कि गारंटीड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती। इसमें आपको ऐसे एनएफटीज लेने चाहिए जिनकी प्राइस एक बार को अगर अप्रिशिएट ना भी हो, तो कम से कम वो उतनी तो बने रहे जितने की आपने खरीदी है। तो हाइप प्लस डिमांड प्लस परसेप्शन पे चलने वाली इस दुनिया में एनएफटीज की, सेलिब्रिटी के एनएफटीज भी क्रैश कर सकते हैं। On that note, I will be taking a short break soon. If you have any more questions regarding NFTs, you can ask me. I will get to the latest news in the market once I come back from this short break, and then you can probably, uh, you know, uh, we'll look at what all is happening in the world of um, क्रिप्टो करेंसी। मेरी आदत है कि मैं जब भी आता हूँ लाइव पे, आई मेक श्योर दैट आई डू डिस्कस ऑल द लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़ दैट विल अफेक्ट यू मेक योर decisions on in the market and on Zbit as well. I make sure that you are enhancing your knowledge when it comes to the crypto market, because that will help you make better financial decisions on the in the market. That will make you make better financial decisions in the market, right? That is all we want from our end as anchors. A job is not just to engage you and keep you engaged and make you deposit and all these things. Our job is also to help you understand that you need to enhance your knowledge when it comes to the market, and that is only because we want you to invest in the market after understanding all the uh, you know uh, complexities around it, all the intrications around it, all the intricacies around it. So that is what we want at the end of the day. Now, if you have any more questions regarding NFTs, I will be answering them one by one. Before I go into the break, I'm waiting for a few more questions from your side. Just let me know if you have any doubts regarding this topic of NFTs or anything else that you want me to discuss in regard to NFTs. Just type it in the box below and I will answer that. I welcome to all the users who are just joined on the app.
on the Zbit platform as well as on YouTube as well. I am looking to answer questions in relations to uh, NFTs, and we are doing an in-depth analysis of NFTs. So if you have any questions regarding NFTs, I will be looking to answer them. We've discussed in detail quite a few topics so far in relation to NFTs again. And any doubts that you have in relation to NFTs, I will be looking to answer them. If you're a new user on the app, and if you are just joined on the live stream, and if you have not made a deposit, I have an offer for you, a giveaway offer. I am giving you 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side, absolutely free of cost. All you have to do is deposit just $3 or more into your Zbit wallet. Once you do that, just let me know your user ID. I will be sending you 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side, absolutely free. This is only for new depositors in the market. I hope now you've understood that not all NFTs are valuable, and quite a lot of NFTs are, based on only on culture, on hype, on speculation, have no, use case attached to them. We also discussed, meanwhile, I've forgotten about this, that we also discussed about the current situation of NFTs in the market and how they are uh, performing, because the market has seen a dip when it comes to NFTs in the recent past. Whatever the hype was, it was way back in 2021, 2022. Uh, since then, the market has shown some kind of a dip. Since then, the market has shifted its attention towards more, you know, crypto, more such NFTs which have use cases attached to them, right? These NFTs are, ones that do have some kind of fundamental use cases in the world as well, because uh, काफी सारे जो नए एनएफटीज थे, पहले पहले के टाइम पे जो बड़े प्राइजेस पे बिकते थे, अब नॉर्मल लो वैल्यू डिजिटल इमेजेस बन गए हैं, और स्पेकुलेटिव मनी जो है वो बेसिकली मार्केट से निकल गई है। 2026 की अगर बात करें अब हम, तो 2026 के टर्म्स में मार्केट जो है वो थोड़ी सी ऊपर तो गई है, लेकिन अभी काफ़ी ऊपर वापस जाना बाकी है, जहाँ पर पहले के स्टैंडर्ड से अगर हम कंपेयर करें तो ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम्स वापस अगेन राइज हुए हैं अभी, हाल ही में जनवरी अगर हम थोड़ा बहुत देखें तो, बट ओवरऑल लिक्विडिटी अभी भी लो है, और न्यू बायर्स जो है एनएफटीज के वो काफ़ी कम आ रहे हैं। दिस इज़ द स्टडी दैट is saying all these things. This is not me. Recovery is there, but वो जो हाइप रिटर्न जो इसका मच नीडेड है अब, वो अभी नहीं हुआ है। इट विल टेक सम टाइम, एंड एक्सपर्ट्स थिंक दैट एनएफटीज का फोकस जितना भी अब है वो प्योर हाइप वाले आर्ट से यूज केस वाले एनएफटीज के तरफ शिफ्ट हो रहा है थोड़ा सा। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट, 2025 में जितना भी इसका एक्साइटमेंट था एनएफटी से रिलेटेड, ये कम तो हो ही गया है, डिक्रीज हो गया है।
क्योंकि अब जो जितने भी यूजर्स हैं और जितने भी लोग हैं वो थोड़े समझदार हो गए, दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉर यूटिलिटीज अटैच्ड। मैंने देख बताया आपको कि पहले हमने जो देखा काफ़ी सारे लोगों ने पत्थरों के भी इमेजेस के एनएफटीज खरीदे हुए हैं, और सस्ते नहीं, 1.2 मिलियन डॉलर्स के। तो बहुत स्टूपिड स्टूपिड डिसीजंस लिए हैं लोगों ने एनएफटीज के मामले में। काफ़ी वेल्दी लोग होंगे ऑब्वियसली। अब ये समझना ज़रूरी है कि अब एनएफटीज को लेके अवेयरनेस मार्केट में आ रही है और ज़्यादा, और अब एक्टिव बायर्स काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन यूज़ केसेस अगर नहीं है किसी एनएफटी के पीछे तो उसको नहीं खरीद रहे हैं। देयरफॉर बायर्स जो नए मार्केट में आ रहे हैं वो थोड़े कम हैं अभी, बट यू नो अभी थोड़ा लॉन्ग टर्म वाइज अगर हम सोचे तो देर इज स्टिल टाइम फॉर एनएफटीज टू ग्रो एंड टू गेट better at what they are offering basically. On that note, I will be taking a short break from my side. When I come back, I will look at the latest news when it comes to cryptocurrency and what the market is showing when it comes to cryptocurrency, how the market is behaving, किस different different tokens और coins की performance देखेंगे हम, क्या उछाल चढ़ाव उतार चढ़ाव आया है मार्केट में, क्या लेटेस्ट न्यूज़ है जो हमें अफेक्ट कर सकती है, आपको अफेक्ट कर सकती है एज अ ट्रेडर या इन्वेस्टर ऑन जीबिट, ये हम देखेंगे। I, I want you to stay tuned. I will be back in the next few minutes. And till then, don't go anywhere. Stay here. I will be back in the next couple of minutes.
Welcome back to the live stream, ladies and gentlemen. I hope that uh, you are here to listen to my conversations around the topic of the day, that is NFTs. What exactly are NFTs? We've already discussed, and we've also discussed uh, what kind of decisions people make when it comes to NFTs, and what are the basic uh, ways, what exactly NFTs stands for, what all NFT covers, what kind of NFT products are there that people buy, and what is the full form of NFT. We have discussed all these things. We will now look at the latest news in the world of cryptocurrency. I have a habit of looking at the latest news in relation to whatever is happening in the world of cryptocurrency that can influence your decisions when you enter the market on Zbit or on any other platform. Uh, so we will look at those news one by one and see what the market has in store for us today. What all coins have had a change, what all coins are, what news stories are there in relation to these coins. Right, so there is a very big prediction from investor Dan Tapiero, right? And he is a veteran when it comes to the cryptocurrency world. What does he have to say? He is saying that he expects Bitcoin to go to $1,80,000 and stable coins to soar in 2026. That is what he feels. We will go through this article. This is Dan Tapiero, and he has made his predictions. Let's see what he has said. Right, we will look to figure out what he has had to say. We will look to understand what his psychology is and whether he is bullish on the 2026 market or not. Right. So, what does he have to say? One of the biggest claims that he is making, one of the biggest claims that this guy is making is that he's saying if you've got $10,000 and want to put it into crypto in 2026, veteran crypto investor Dan Tapiero, this is the person that we're talking about here. Dan Tapiero doesn't hesitate. I think you just split it between Bitcoin, Ether, and Solana and decide how you like to split it. But zooming out from retail portfolios, Tapiero says some of the biggest opportunities lie in the crypto ecosystem, specifically the infrastructure that's finally breaking into the mainstream. Now, there are all kinds of predictions in the cryptocurrency market. A lot of people are bullish on a lot of different coins, but whether these predictions come out to be true or not, that we, you know sometimes they do, sometimes, and most of the times they don't, right? uh, because they are very big predictions. Yesterday we did read a prediction from someone who said that he expects ETH to hit 15,000 by 2027. These were ETH co-founders, and their prediction is that they think that ETH will hit 15,000 by the end of 2026 or by 2027. So that was a big claim. I found it really unbelievable that people are hoping and are so bullish on ETH. Today we are reading that
uh, you know, Bitcoin will go to 1,80,000 in 2026. Again, that's a big hope from someone who is a veteran crypto investor, but I still feel like it isn't. That's being very bullish. That is, it's a bet. Anyway, we will read through this article and we'll understand why he is saying that. Stable coins, for example, are now powering global payments with transaction volumes reaching 33 trillion in 2025, up from 19.7 trillion in 2024. There is an entire world growing up around traditional players trying to figure out how to incorporate the stablecoin rails into whatever they are doing. De Piero, who runs leading growth equity from 50T funds, said Bitcoin also remains central to his thesis. Now, what is his thesis? Let's read about it. Both as an investment and as a macro hedge, he expects it to reach $180,000 in the current cycle, citing a combination of demand growth and global monetary shifts. This is just a correction the bottom is in, he said, referring to recent market pullbacks. Tiberio sees strong tailwinds from falling interest rates and large scale government spending on AI infrastructure. That global push is leading to currency debasement, not just of the US dollar, but fiat currencies across the board. That's very bullish for Bitcoin, he said. I find it very bullish too. While DPRO sees promising growth in tokenization, blockchain AI convergence, and on-chain prediction market is more cautious on recent trends like crypto treasury companies, which he believes offer little real innovation. There's no more, he said. I don't really see what the long-term value proposition is for 95% of them. His final takeaway: crypto in 2026 is still early, but it's growing up fast and increasingly being shaped by real use cases, not just speculation. The reason why the stablecoin and payments and financial aspect is taking off more quickly is because those people care first and foremost about money, Tapiero said. So this person, Tapiero, feels like Bitcoin could go to 1,80,000 in 2026 itself. He's being very bullish. Let's see if that happens or not. But at the moment, it's here. He's saying it'll almost double. So that's a big claim from him, big prediction. I hope to wait and see how it does, right? Now, let's look at some other news. Kathy Wood calls Bitcoin good source of diversification for investors seeking higher returns. ARC's data shows Bitcoin has weak price correlation with stocks more than gold, making it potentially attractive for risk-adjusted portfolio management. ये सारी न्यूज़ मैं डिस्कस खाली इसलिए करता हूँ क्योंकि ये आपको बेटर डिसीजंस लेने में इवेंचुअली हेल्प करेगी व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम इन द मार्केट, when you are looking to invest in the market, trade in the market, do buying or selling on Zbit or on any other platform.
इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि लोगों के प्रिडिक्शंस क्या हैं, whether it is Bitcoin related or the cryptocurrency market as a whole से related, या किसी और टोकन से रिलेटेड, या इन्वेस्टर्स से रिलेटेड. Now what does she have to say? She is the CEO of Ark Invest, right? Again, what is her take? Let's read that now. Bitcoin could play a growing role in institutional portfolios, according to her. Would describe the asset as a valuable diversification tool in a 2026 market outlook. In a wide-ranging note, would point to Bitcoin's new correlation with other major assets classes, including gold, equities, and bonds, as a reason asset. Allocators should take it seriously. Bitcoin should be a good source of diversification for asset allocators looking for higher returns per unit of risk, she wrote. Would argue that since 2020, Bitcoin has shown weaker price correlation with stocks, bonds, and even gold than those assets have with each other. According to Arxeta, for example, Bitcoin's correlation with the S&P 500 was 0.28 compared to 0.79 for the S&P 500 versus real estate investment trust, implying that Bitcoin's low correlation with the other makes it a relatively better bet. Hmm. So this is the correlation matrix that she has shared. For large institutional investors managing risk-adjusted portfolios, this may open the door for Bitcoin to serve more than a speculative play, said Wood, who has been a Bitcoin bull for a while. With a price target of about 1.5 million for the digital asset by 2030. However, Mark CEO's bullish comments came at a time when Jeffrey strategist this did a complete 360 on Bitcoin.
तो दो न्यूज़ जिस पे हमारी नज़र बनी रहेगी अब वो ये है, लैक ऑफ लिक्विडिटी इज अ ग्रोइंग कंसर्न इन क्रिप्टो मार्केट सेज आलोसिस जेसन एटकिंस. Crypto markets have spent the past year taking up institutional demand, but one constant keeps resurfacing beneath the headlines. There's just not enough liquidity currently in the market to let Wall Street enter with its size and scale without destabilizing prices. Speaking ahead of Consensus Hong Kong, Jason Atkins, Chief Commercial Officer at crypto market maker Oros, said illiquidity, not volatility, illiquidity, not volatility, remains the industry's biggest structural problem. You can't just say institutional capital wants to come in if you don't have the avenue for them to do it. Atkins said the issue he argued is whether markets can withstand the size of institutional appetite. It's one thing to be like, we've convinced them to come now. Atkins continued, it's like, well, do you have enough seats in the car? That's a very good concern that Jason Atkins has raised. According to Atkins, crypto markets are illiquid not because interest has vanished, but because major deleveraging events like the October 10 crash have pushed traders and leverage out of the system faster than they can return. Hmm. Liquidity providers respond to demand rather than create it, meaning thinner trading activity naturally leads market makers to pull back risk. That reduction in depth then feeds into higher volatility, which in turn triggers stricter risk controls and further withdrawal of liquidity. Institutions, he argued, are structurally unable to step in as stabilizers while markets remain thin, leaving no natural backstop when stress hits. The result is a self reinforcing cycle in which illiquidity, volatility, and caution feed into one another, keeping markets fragile even as longer term interest remains intact. Volatility itself, Atkins said, is not what deters large allocators. The problem emerges when volatility collides with thin markets. Harnessing volatility is difficult in illiquid markets, Atkins said, because positions become hard to hedge and even harder to exit. Hmm. Atkins also pushed back on the idea that capital is simply rotating out of crypto and into artificial intelligence, arguing the two are not at the same point in their cycle. Hmm. While AI has existed for years, Atkins said its surge in investor attention is relatively recent and is not causing capital inflows to crypto to dry up. Alright. By contrast, crypto is further along in its cycle and now dealing with consolidation rather than novelty.
I do think that the industry has started to reach a point of consolidation, Atkins said, adding that there's not as much financial innovation happening. Many of crypto's core primitives, he noted, are no longer new. Uniswap and AMM and the AMM model is not a new thing, he said. So this is again a very concerning topic when it comes to lack of liquidity, which is becoming a growing concern in crypto. And Jason Atkins has been, his comments are spot on uh, ahead of this consensus Hong Kong. His comments are really in line, and he understands the market way better than a lot of other bullish investors and bullish people in the market I have read in the recent past, and I have read alongside you. uh, so this is a concern that is bothering for a lot of crypto investors. We'll come to the other news, how tokenized assets could become a $400 billion market in 2026. After stablecoins prove product market fit, crypto founders and executives say 2026 is when banks and asset managers will push tokenized assets into mainstream markets. Stablecoins or crypto's breakout product in 2025 to the mainstream, and in 2026, the industry is pushing to those on chair dollars to work by turning everything from equities to money market funds to gold into tokenized tradable level blockchain blocks on blockchain rails. After years of pilots and proof of concepts, tokenization now look less like a niche crypto experiment and more like a distribution upgrade for capital market, with financial giants like BlackRock, JP Morgan, or BNY deeply involved. The tokenized asset market almost quadrupled through the year to nearly 20 billion by the end of 2025. Nurudan 250 has a message for us that is not visible to me. I will have to rejoin and check. If you are new to the live stream or are a new depositor, I just want you to know that I have a giveaway offer for you. If you have not made any kind of deposits on uh, a Zbit so far, if you are a new depositor, I am giving you 20,000 Bitcoin. I'm sorry, 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free. I'll just repeat that. अगर आप नए यूजर हैं तो मैं आपको अपनी तरफ से 20,000 शिबा इनू या 20,000 पेपे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं. आई एम गिविंग आउट फॉर फ्री फ्री फ्री. All you have to do is just deposit $3 into your own Zbit account
And as a new depositor, you will get 20,000 Shiba Inu or 20,000 Pepe from my side absolutely free of cost. So if you're a new depositor, don't miss out on this offer. You can use this offer and start your crypto journey, start trading or investing on Zbit. Okay, this is just to give you a positive kickstart on your crypto journey, right? Now we will look at the Iran US war as well, and see whether there is any change because of it in the crypto market, because it is bound to make an impact on the crypto market. I have read all of these news in the last few days. That is why I don't think there is anything new. Okay, just let's just look at uh, it's really funny what's happening in the world of Iran and the US, the war between them, the conflict between them, because a lot of comments from Trump seem very you know vague at times. His comments are really not उससे कहते हैं ना कि शोभा नहीं देता एक प्रेसिडेंट को, वो भी यूएस के प्रेसिडेंट को। ये चीजें उन्होंने कभी भी खैर ध्यान नहीं दिया है, इन चीजों पे उनको कोई फर्क पड़ता भी नहीं है। He fooled deceived us, Iranian protesters say Trump betrayed them. For many Iranians who poured onto the streets during the latest wave of protests, US President Donald Trump appeared to be a potential lifeline. That belief, protesters say, is what makes his subsequent reversal feel like a betrayal. The sense of grievance comes from a gap between Trump's claims and his actions. Early in the unrest, US President publicly encouraged Iranian protesters and issued warnings to Tehran when he declared on social media that help is on its way, and later on, wait, बेचारों को उकसा दिया ट्रंप ने, and later warned that the US was locked and loaded if peaceful demonstrators were harmed. Many Iranians interpreted those words as a promise of concrete backing, possibly even military intervention, as protesters surged back onto the streets. The Iranian state responded with familiar tactics, cutting communications, deploying security forces, and using lethal violence. Accounts from across the country describe sniper fire, machine gun attacks, and large numbers of dead and missing. For some Iranians, responsibility does not rest solely with their government. News that the Pentagon had ordered some non essential personnel to leave a major US base in the region was widely read as preparation for conflict. This news I am reading because ईरान यूएस वॉर का हमारा टॉपिक रहा था लास्ट डे बिफोर yesterday. I had discussed this in quite a lot of detail, and I had discussed how it will impact the cryptocurrency market. I had also discussed इन कंट्रीज के पास में रिलेशंस क्या रहे थे, और जिसकी वजह से आज ये मैटर इतना ज़्यादा एस्केलेट कर गया है। और मैंने ये भी डिस्कस करा था कि करेंटली कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने के या ट्रिगर जो अभी हुआ है वो एस्केलेट हुई हैं जो टेंशन्स, वो क्यों हो रही हैं। ओवर द इयर्स न्यूक्लियर पावर यूएस के बनने का भी एक रीज़न था, जो कि यूएस को ऑब्वियसली बॉदर कर रहा था। ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने का जो सपना है वो यूएस को बॉदर करता था। उसके अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैड आल्सो डिस्कस हूदीज को और हिजबुल्लाह जो कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको कैसे ईरान फंड करता है और डिस्टेबिलिटी आती है उसकी वजह से उस रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में। तो ये मैंने देखा था।
Apart from this, I had also discussed uh, कि क्रिप्टो मार्केट को ये कैसे इफेक्ट करेगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो खुद ही में एक इम्पोर्टेंट फिगर है, एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस पूरे आर्ग्यूमेंट में, इस पूरे यू नो कॉन्टेक्स्ट में। अगर हम ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट को देखें, उनका क्या रोल रहा है इस कॉन क्या उनका रोल रहा भी है या नहीं रहा है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी escalate कर दिए tensions because of his tweets, because of his remarks on Twitter, and his very blunt and very vocal opinion of things on the situation that is there in Iran. uh, जो सिचुएशन है ईरान में वो काफ़ी बॉदरिंग इसलिए भी है क्योंकि डोमेस्टिकली देर आर प्रोटेस्ट गोइंग ऑन इन ईरान, एंड उसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है, डिस्टेबिलिटी है, इंस्टेबिलिटी है, और पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल टर्मोइल वहाँ पर देखने को मिल रहा है लोगों के बीच में। एंड that turmoil is leading to really bad environment for the protesters, जिनको काफी नंबर में मार दिए, इन thousands of protesters have been killed and murdered, एंड इंटरनेट ब्लैकआउट हो गए हैं वहाँ पे, और कम्युनिकेशंस हर तरह से ब्लॉक कर दिए गए हैं। प्रोटेस्टर्स पे अटैक करा जा रहा है, स्नाइपर्स भी तैनात हैं जब ये प्रोटेस्टर्स स्ट्रीट्स पे आ रहे हैं। तो अब जो मैं न्यूज़ पढ़ रहा था वो इस बारे में थी कि ईरान के प्रोटेस्टर्स जो हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप मिलिट्री इंटरवेंशन तक करवा सकते हैं, जैसे कि यूएस में कराया गया। तो इसीलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि समझना कि ईरान की डोमेस्टिक सिचुएशन भी रिस्पॉन्सिबल है इस टेंशन्स के एस्केलेट होने का पीछे, वो भी एक कारण रहा है। एंड सो it's important to understand that as well. Having said that, Iranians were expecting Trump to make some kind of a military intervention, and it could have happened by now. It hasn't happened yet, or maybe it might not even happen now, or maybe it'll happen all of a sudden. Maybe there is a surprise military intervention that the US is planning. Who knows? No one knows. But um it will affect crypto market if there is an attack on Iran, और हमें वो देखना पड़ेगा कि वो मार्केट को कैसे अफेक्ट करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी देखने का तो चांस पूरा पूरा है बीटीसी पे, और बीटीसी इफेक्ट होगा तो मतलब पूरी क्रिप्टो मार्केट रिएक्ट करेगी किसी ना किसी तरीके से, आउट ऑफ फियर, आउट ऑफ यू नो यू नो होप, या कि लोग ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे मैंने आपको इससे मुझे याद आता है अगले टॉपिक जो हमारा कल जो टॉपिक था उसकी तरफ हम जाते हैं इसकी वजह से, जो कि था कि काफ़ी इन्वेस्टर्स इस टाइम पे सेफ हेवन एसेट्स की तरफ जाते हैं, जो कि है गोल्ड। और कल हमने डिस्कस करा था कि बिटकॉइन जो है वो गोल्ड कभी बन सकता है नहीं, तो मैंने आपको उसमें ये बताया था कि इसका सीधा सीधा जवाब तो ना है, शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गोल्ड बनने का जो गोल्ड की जर्नी थी वो 5,000 साल ऑलमोस्ट लग गए उसे गोल्ड बनने में। इट हैज़ बीन देयर सिंस द लास्ट 5,000 years, but Bitcoin is relatively new. It's just been 15-16 years since Bitcoin has come into the world, and it has a very long journey to uh, cover. So it is important that you understand how Bitcoin is progressing. It is obviously progressing in the right manner and with the right uh, you know it is obviously progressing in a manner that is fast, rapid, and is going to
it might become the second most bought digital asset as well. It might become digital gold 2.0. Who knows, right? And it might become a parallel option to that of gold, but it might not never replace gold, right? uh, ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड को हम फॉरेन रिजर्व्स में जैसे रखते हैं सारी कंट्रीज, वैसे ही 20% जो है वो बिटकॉइन भी रखने लग जाए आने वाले टाइम में। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, और ये बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है, ये रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। गोल्ड को भी जैसे हम रखते हैं आए हैं, वैसे हम बिटकॉइन को भी रखने लग जाएं, बट रिप्लेस करना एक अलग ही टॉपिक हो जाता है वो, एंड इट इज़ वेरी लॉन्ग रोड दैट बिटकॉइन हैज़ टू cover, right? So we've looked at all the latest news as well as all the topics in and around uh, the topic that we had, which was uh, you know the NFTs and the in-depth analysis that we did around NFTs। मैंने आपको बताया कि NFTs होते क्या हैं, एक्चुअली उसका फुल फॉर्म क्या होता है, NFTs किस किस तरह के होते हैं मार्केट में, किस किस कैसी कैसी चीज़ों का लोग NFT करवा रहे हैं, और NFT की मार्केट 2025 2021 में कैसे थी, 2022 में कैसी थी, 2026 में कैसी रही है, और क्या इसमें एक यूटिलिटी ड्रिवन चेंज आ रहा है, आर पीपल मूविंग टुवर्ड्स अ यूटिलिटी driven world when it comes to NFTs or not, that we looked into as well। मैंने आपको बताया कि लोग काफ़ी स्टुपिडिटी और ऐसी चीज़ों का भी NFT करवाते हैं, जिसमें लोग ये सोचते हैं कि जिन जिन एसेट्स के पीछे कोई फंडामेंटल यूटिलिटी इन्वॉल्व नहीं है, उनमें भी लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और खरीद लेते हैं। मे बी दे आर वेल्दी यूजर्स, वेल्दी पीपल, बट ये भी देखा गया है, दिस इज ऑल्सो यू नो prospect that has been seen, and so I told you it is important to think of NFTs as an investment, uh, you know and look at NFTs as something that is a investing in an NFT should be about property or a product that you feel will actually appreciate in the future, or might, even if it doesn't fluctuate and appreciate, it should at least have the same value, right? मैंने आपको जैक डॉर्सी के ट्वीट का एग्जांपल दिया था। एक बंदे ने उसके ट्वीट को NFT करवाया, और 2006 में उन्होंने ट्वीट करा था, उनका फर्स्ट ट्वीट था, ही वाज द को फाउंडर ऑफ ट्विटर, एंड उन्होंने ये ट्वीट करा था अनाउंसिंग हिज अराइवल ऑन ट्विटर, और एक बंदे ने उसका NFT करवाया और $2.9 मिलियन का कराया। जब $2.9 मिलियन का करवाया तो उन्होंने थोड़े टाइम के बाद इसको बेचना चाहा एक हायर प्राइस पे। वो चाहते थे $48 मिलियन उनको मिले, वो हुआ नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बिड्स उनके पास आ रही थी वो 7,000 तक के आ रहे थे, $7,000 तक। तो इसका मतलब था कि जो उनके कमोडिटी ने, उनके NFT ने देखा, वो एक क्रैश था, हाइप जितनी भी थी उसके अराउंड वो खत्म हो गई थी, और 99% उनको डिप देखना पड़ा। इसलिए it is important for you to invest in an NFT which has some kind of utility attached to it, which has some kind of fundamental use case in the real world, right? ये important है, ये मैंने आपको बताया। मैंने काफ़ी सारे आपको मोस्ट एक्सपेंसिव NFTs के बारे में भी बताया इन द वर्ल्ड। 91.8 मिलियन के एक NFT के बारे में मैंने आपको बताया, 69.8 मिलियन के एक NFT के बारे में मैंने आपको बताया। काफ़ी सारे NFTs के बारे में मैंने आपको कुछ स्टूपिड डिसीजंस जो लोग लेते हैं व्हेन इट कम्स टू NFT, बाइंग NFTs विद एब्सोल्युटली नो यूज केस, विद एब्सोल्युटली नो यूटिलिटी वैल्यू अटैच्ड टू इट, उनके बारे में भी बताया।
एक रॉक वाले एनएफटी के बारे में बताया दिखाया जिसको लोग खरीदते हैं, और वो भी मिलियन में खरीदा है लोगों ने, एंड इट्स नथिंग बट अ जेपेग इमेज ऑफ अ रॉक। तो वो भी लोग खरीदते हैं, और फिर देयर इज नो यूज केस अटैच टू इट, एंड सबसे खराब बात ये है कि वो एक जेपेग इमेज है और उसमें बस एक रॉक है, और उस रॉक में कुछ नहीं है उसकी यूज केस। एंड बस फर्क ये है कि, और रॉक भी सबके पास हैं ऐसे, काफी सारे रॉक्स हैं जो काफी लोगों के पास हैं, 18 ऐसे रॉक्स हैं, और बस फर्क यही है कि उनका कलर डिफरेंट है। पर लोगों ने ऐसे एनएफटीज भी कराए हुए हैं, which from which kind of investment decisions when it comes to NFTs people are moving away from। दुनिया जो है वो अब यूटिलिटी ड्रिवन NFTs की तरफ जा रही है। और ये रॉक वाला जो है मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत मुझे फनी भी लगा और बहुत मुझे सैड भी लगा। तो ये हैं वो रॉक बेसिकली, अगर आप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं है, ये बस रॉक्स हैं कुछ, जेपेग इमेज है रॉक की, और रॉक भी नहीं है असली में। और इनमें लोगों ने इन्वेस्ट करा 1.3 मिलियन डॉलर्स से ज़्यादा तक की इसमें इन्वेस्ट करा। ओनली 100 सच जेपेग इमेजेस ऑफ दीज रॉक्स एग्जिस्ट, एंड ये फ्लेक्स कल्चर की वजह से बस पॉपुलर हुआ है, और इसके पीछे हुई जीरो आर्ट वर्क, जीरो क्रिएटिविटी, जीरो यूटिलिटी, नथिंग, जीरो एक्सप्लेनेशन इज अटैच्ड, एंड इट्स वेरी सैड, इट्स जस्ट अ मीम, and people spend so much money on memes. I mean, people must be having so much money, that is why they are spending on such stupid NFT decisions, right? I hope you don't make such decisions in your crypto journey, in your NFT journey, because I feel like it is a really sad investment to make. Right, you should always be investing in tokens that are having some kind of utility value attached to them.
Let's just have a look at the market as well when it comes to all these coins. You have BTC right in front of you. It's currently trading at 95,000. And let's also look at XRP. XRP is at 2.0486 USD. ETH 3300 में है, and Dodge is at 0.136. Solana is at 141. And lastly ADA देख लेते हैं. ADA is at 0.3909. I am just looking at comments that you have to make on the live stream on YouTube as well as on the zbit.com app. Uh, I will just refresh my comments list and look at all the comments that you have made so far on the zbit.com live stream. We have been live since the last 3 hours, and I am looking to now, look at all the comments that you have to make, whether it is on YouTube or on the live stream. I'm live on both the places. I hope you are keeping an eye on the market. Any latest news, we will also look at that. कैसे वो Wall Street integration will power crypto's next phase, says Fidelity. Digital assets are moving quietly yet inexorably from niche experiment to structural financial layer, and 2026 may be the year the broader market finally notices. That's the view from Fidelity Digital Assets, whose recent 26 digital assets are undergoing the kind of fundamental transformation unseen in global trade. It takes a long time. You don't see results immediately, Kuiper said, but what's clear to him, this is not going away. More building, not just bullishness. It's funny because काफी लोग कहते हैं कि uh, you know
कुछ कह रहे हैं कि 2026 में in fact follow a similar trajectory to what occurred in 2025 with digital assets continuing to integrate into the traditional financial system. Continued regulatory clarity could potentially accelerate momentum, making way for ongoing institutional participation, and over time, capital from pensions, endowments, and foundations could steadily enter the digital asset space as regulatory barriers evolve. If Bitcoin's shipping container movement does arrive, it won't be because of a sudden price explosion, but because an entire financial ecosystem, long in the making, finally clicks into place. अगेन ये बुलिशनेस ही है और काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम बिटकॉइन दिस ईयर. किसी ने तो कहा है कि वो ऑलमोस्ट बिटकॉइन चला जाएगा 1,80,000 डॉलर तक इन द ईयर 2026. सो दैट हैज़ टू बी सीन. डैन टेपियरो ने कहा है ये. इनसे ज़्यादा बात मुझे सही जो लगी थी वो की थी वुड की लगी थी. इन्होंने जो प्रिडिक्शन करा है. On that note, I will be taking a short break and I will be back in the next few minutes. Uh, till then, stay tuned and I will be back with more on the topic that is NFTs, right?
Welcome back to the live stream. We were discussing NFTs and what exactly are NFTs. That is what has been the topic for today, and I have discussed it in quite a lot of detail. Uh, from discussing what exactly NFT stands for, and two, what all kinds of NFT decisions do people make, whether it is out of investment behavior or just believing speculation and hype, or whether it is from that comes from a decision based on just stupidity, right? I showed you how people have bid for different NFTs, whether it is NFTs related to Jack Dorsey's tweet, or a rock that was sold off for $1.2 million as well. So it's important for you to understand that most NFTs are bought or sold off because of the hype that is involved, because of the FOMO that is involved, and because of the trend that is going on in the uh, you know NFT worlds, right? Uh, we also discussed that we also discussed a list of the most expensive NFTs in the world so far. I told you that the merge, which was a NFT, by from the artist called Park, and it was sold off and became the most expensive NFT sale record. It broke all the records. It was sold for around $91.8 million, and it was sold off in 2021, right? That was the most expensive NFT ever bought in the NFT market, right? Uh, now, I also talked about Dorsey's tweet when it comes to Twitter, and when he was obviously the co-founder of Twitter, and he talked about and he tweeted that he is just setting up my Twitter. That's what he wrote on Twitter way back in 2006, and that tweet was made into an NFT. It was bought by Sina Estavi, a person named Sina Estavi. In 2021, he was a crypto entrepreneur, and he bought this NFT for $2.9 million, and it became a headline as to the world's first tweet sells for millions. But what happened later was, um, not according to what Sina Estavi would have thought, because he expected to sell it off in 2022, 2023, and he expected a bid of around $48 million. But what happened was exactly the opposite. Instead, the bids came in between the range of 280 to $7,000. That's it. And the value had crashed by over 99%. And why did this happen? It happened because the hype around NFT was bursted, and the market was down, and the utility obviously behind this tweet anyway was zero. The fundamental value was zero, and it became big because of the hype that was involved, because of the FOMO that was created, but it eventually led to a crash cycle. Then we also talked about uh, you know the flex culture. In the crypto world, NFTs actually mean digital flex, right? Uh, like, people on Instagram often show off their luxurious bags and their handbags. In the crypto world, NFT profile pictures are flexed by people in the market, uh, because high value NFTs obviously give a sense of status in the market, and this social status also pushes the price of these NFTs into the millions, right? It could be because also of the scarcity that is involved when we talk about NFTs, क्योंकि ऐसे NFTs और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत कम होते हैं मार्केट में, या रेयर होते हैं, इनके पीछे एक स्कैरसिटी इन्वॉल्व होती है.
इनकी डिमांड काफ़ी हाई होती है, सप्लाई काफ़ी कम होती है और इसीलिए प्राइस ऑटोमैटिकली काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। And the same logic applies to NFTs as well when it comes to rare sneakers, rare cards, rare artwork, or rare watches, for example. NFTs पे ये सेम रूल अप्लाई होता है स्कैरसिटी का। तो एनएफटी के प्राइस होने का मैंने आपको रीजंस बताए डिफरेंट डिफरेंट, और मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी, स्कार्सिटी, हाइप, स्टेटस, इन सब के कॉम्बिनेशंस की वजह से एनएफटीज ऑफन गो फॉर मिलियंस। When it comes to the future of NFTs, it's important that I give you a slight breakdown from my end. NFTs के मामले में JPEG वाले NFTs का टाइम अब जो है वो ख़त्म हो गया है। अब जो है टाइम जो कार्टून मंकीज और पिक्सल पंक्स, मैंने आपको एक रॉक का एनएफटी भी दिखाया जो 1.2 मिलियन डॉलर्स का गया था। इट हैड एब्सोल्युटली नथिंग। 100 ही रॉक के ऐसे जेपेग्स हैं दुनिया में, और वो रॉक्स 1.2 मिलियन डॉलर के, और फर्क भी नहीं है किसी रॉक के बीच में। बस कलर ही डिफरेंट है इन सारे रॉक्स के। तो ऐसे एनएफटीज जिनके पीछे कोई यूटिलिटी अटैच नहीं है, रैंडम जेपेग्स हैं, उनके जो अब उनका जो करेंटली फेज है वो अब ओवर हो चुका है। अब जो फ्यूचर है और in the direction in which NFTs are progressing is utility and not pictures. I hope that you understand that, and your investments in the future will, if you are investing in any NFT, it is on an NFT that has some kind of utility or fundamental value attached to it. ऐसे ही कोई, this is very much similar to these actually these मीम्स वाले और जितने भी रैंडम जेपेग्स वाले एनएफटीज है, दे आर वेरी मच लाइक मीम कॉइन, दे एक्चुअली डोंट हैव एनी utility value attached to them, right? And they are bought for millions and millions of rupees, but दिखाने के लिए कुछ नहीं होता है इनके पीछे, कोई फंडामेंटल वैल्यू, कोई रियल वर्ल्ड यूज केस इनमें नहीं होता है। अब रियल वर्ल्ड काम के लिए एनएफटीज जो यूज होंगे, उसी तरफ मार्केट बढ़ रही है।
whether it is for tickets that are for concerts or sports events or IPL or airlines, ऐसी सारी चीजें जितनी भी है, वो भी फेक टिकट्स नहीं, ब्लैक मार्केटिंग नहीं, रियल टिकट्स, मेंबरशिप्स हो गए जिम्स की, कम्युनिटीज की, क्लब्स की, एक्सेस पास हो गए, आइडेंटिटीज हो गए, सर्टिफिकेट्स हो गए, या डॉक्यूमेंट्स हो गए, इंपॉर्टेंट डिग्रीज हो गए, बैचेस हो गए, इन सब के लिए एनएफटीज यूज करे जाएंगे, वारंटी कार्ड्स हो गए, एंड इट विल प्रूव दैट दिस इज completely yours. There is no one who owns it in the world. You are the sole owner of it. ये था point number 2. Point number 3 is that gaming NFTs will explode in the coming future, right? uh, अगर हम फ्यूचर की मार्केट को देखें, तो फ्यूचर गेम्स में स्किन्स, वेपन्स, कैरेक्टर्स, लैंड, सब एनएफटीज होंगे. आप बाय करो, सेल करो, अर्न भी कर सकते हो, सब ये सारी चीजें, सब एनएफटीज का फ्यूचर नजर आ रहे हैं. तो इट्स नॉट गोइंग टू बी लाइक it is in current games where items belong to the company. यहाँ पर आप खुद ओन कर पाओगे ये सारी चीजें. तो in future NFTs will explode. That looks like will be the future. Another thing that is being seen and might be seen in the future is that brands NFTs को quietly adopt करेंगे. Big global brands NFTs से ये loyalty programs, special rewards, limited drops और exclusive access जैसी चीजें provide कर सकते हैं. Whether it is these bigger brands, if you know about them, whether it is Starbucks, Nike, Adidas, they are already doing it, right? एनएफटी वर्ड जो है वो हाइड हो जाएगा, और जो इनकी यूटिलिटी है वो सामने आएगी, वो लोगों के सामने आप देख पाएंगे लोग खुद. तो ये जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो ये है कि ब्रांड्स एनएफटी को क्वाइटली अडॉप्ट करेंगे. दैट इज पॉइंट नंबर 4. नाउ
Point number 5, NFTs will become invisible tech. जस्ट लाइक इंटरनेट वर्ड का हम यूज नहीं करते हैं अब, क्लाउड की जगह सिर्फ एप्स यूज करते हैं, उसी तरह एनएफटीज बैकग्राउंड टेक बन जाएंगे और आप एनएफटी को यूज करोगे बिना एनएफटी शब्द बोले, यू नो, सो इट विल बिकम लाइक द इनविजिबल टेक्नोलॉजी बिहाइंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड ऑफ the NFTs. This is point number 5. Point number 6 is that governments will also move towards using NFTs, but slow and steadily, right? Whether it is land records, whether it is digital IDs, whether it is vehicle registrations or education certificates, सब tamper proof blockchain NFTs बन सकते हैं. And so government will also eventually start using NFTs slowly but steadily. That is point number 6. And what is looking at the current times, what looks like will be one of the biggest trends in the market is AI and NFTs. That is looking like it will be the biggest future trend. AI artworks plus NFTs यूनिक रहेंगे, वेरीफाइबल रहेंगे और क्रिएटर के बनाए गए खुद रहेंगे, राइट? ऐसे में AI जनरेटेड कलेक्टेबल्स और जितने भी यूटिलिटी वाले NFTs रहेंगे could very well be the next boom in the world. That is point number 7. फाइनली स्पेकुलेटिव एनएफटीज की बात करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट हाइप इज प्रोबेबली फिनिश्ड बिकॉज हाई हाइप जितनी भी होती थी एनएफटीज के अराउंड दैट इज गॉन. अब यूटिलिटी एनएफटीज ही फ्यूचर है एंड एनएफटी मार्केट मेच्योर होगा, अब एक्सप्लोड शायद ना करे, इट विल गो थ्रू हिज ओन जर्नी, ओन फेज.
And with that, I come to a close of this topic, NFTs in general and NFTs, an in-depth analysis. That's what we have done so far, and I feel like I've done justice from my end to explain to you this topic that a lot of people have doubts over, and a lot of people are not having full clarity about. So I hope that I've discussed it in full. Uh, I've done a full analysis of it, an in-depth analysis of it. And if you have any doubts regarding NFTs or whatever topics that we have discussed today, whether it is the Iran-US war or the news that we've gone through in the last few hours, I will be able to now give you a clear answer of any answer that you want in relation to any of these topics, right? Uh, I will be waiting for your questions. If they are there, I am looking to answer them on the Zbit app as well as on YouTube. If you are new and you haven't heard the offer for today, which is the giveaway offer, I am just letting you know that you can win. Not just win, I am giving you for free 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side, absolutely free of cost. You have to just deposit $3 or more into your Zbit account, and I will be giving you uh, 20,000 Pepe or 20,000 Shiba Inu from my side absolutely free, right? This offer is only there for न्यू डिपॉजिटर्स, जो लोगों ने अब तक जीबिट पे डिपॉजिट नहीं करा है, पहली बार करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं करा है, इस ऑफर का आप इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी तो आप डिपॉजिट करोगे, और जब भी आप करोगे तब शायद ये ऑफर ना चल रहा, तो अभी चल रहा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। Any questions that you have regarding the topic of the day, what are NFTs, and an in depth analysis of it, you can go ahead and ask. If not, I will be heading off in the next few minutes. Any questions from your side, I will be happily answering them. You can probably comment with your questions on the Zbet app or on YouTube as well. I am live on both the platforms, and I am यूवी पाजी की एनएफटी, यूवी पाजी की एनएफटी के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पास्ट में। उनका जो बैट है जिससे उन्होंने सिक्स सिक्सेस मारे थे, वो काफ़ी महंगी एनएफटी थी, और इट्स अगेन अ प्राइस पोजीशन। इट्स द ओनली बैट विद विच युवराज सिंह, वन ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स, हैज हिट six sixes, right? And so it is one of the prize possessions when it comes to the NFT world, right? I'm sure you have some kind of an understanding about it, Pratik, and I hope that we have discussed your topic as well, your question.
ब्रो ये बता दो बस कि मुझे डेली 100 to 500 USD बाय करके दूसरे जैसे एक्सचेंजेस पर या वांटेज या बाइनेंस पर ट्रांसफ़र करना है तो कोई रूल्स तो नहीं कि कहीं मैं फ्लैट इंडियन मनी से बाय कर लूँ और फिर ट्रांसफ़र करते वक्त कुछ रूल्स हों। Whatever rules are there on on Zbit, you can obviously have a look at. They are rules that are universal to everyone. um, I would recommend you to go through the list of rules and then make the transfer that you are asking me about, right? And I hope that that answers your question. I am not, the sole decision maker here on Zbit, but I am here to help you out. You should always go through the rules and regulations that are there, and do look at them one by one. On that note, I will be bringing an end to this live session. Uh, I had an amazing time answering your question and discussing this topic. What are NFTs? And I hope that I did justice to all your uh, doubts and queries. If you have not deposited on Zbit, if you're not invested in the platform, please do so. I will be meeting you very soon. I will be back here on Wednesday, and I hope that you developed a fair understanding of what all we discussed today. I'll be back with a newer topic. Till then, stay safe, stay healthy, and let me know if you have any queries. I'll be happily answering them. Goodbye, take care, and stay healthy.